57% of cells present in human body are microbial cells, and only 43% are human cells. So, isn't it an amazing fact that 57% of the cell present in human body are microbial cells? So, yes, it is an amazing fact, and myself Mohammad Furqan, and from today we are going to start a new lecture series based on microbiology. So, today's topic is microbiology and introduction. What is microbiology? Microbiology word can be splitted into two parts, micro and biology. So, what do you mean by micro? When we consider 1 meter and when we divide it by 10 raised to 6, or indirectly when we take 10 raised to minus 6, this is called as micrometer. And the study of the organism which are having the size of micrometer are called as microbiology. For example, the organism which is having size of 0.0000001 meter are considered as microorganisms, and the study of the organism which is having the size of 10 raised to minus 6 meters, or 10 0.0000001 meter, the study of this kind of organism is considered as microbiology. सो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिसका साइज़ 0.0000001 मीटर या 10⁻⁻6 मीटर होता है, उन स्टडीज़ को हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्लासीफाई करते हैं. सो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, microorganism, which is a very diverse group of organisms and having very simple life forms which include bacteria, archaea, algae, fungi, protozoa and viruses. माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत ही माइन्यूट या बहुत ही छोटे होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, आर्किया, अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. So, as you see in these two adjoining images, in this image you can see that when you divide the number by 10 raised to 6, or 0.0001, as we have already seen, is called as micro, and as this as we are measuring the length, so it is micrometer. So the micrometer or the size is of the viruses, bacteria and all. So normal human size may be in the ranges of meters. Ostrich egg may be ranging in 10 centimeter or 100 mm, and eggs frog may be around 1 mm and less than that. And below that there is plant cell, animal cell, bacteria, mitochondria and flu viruses are constituting. So this section or this portion is having micro life forms. So these micro life forms when we study, so it is called as microbiology. So बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो इस स्केल के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करती है जो कि माइक्रोमीटर्स में होती है, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ माइक्रोब्स. सो हमने पहले ही स्लाइड में देखा कि 57% ऑफ द सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड 43% दैट ऑफ ह्यूमंस. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर इतने 57% सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है, तो वेयर डज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन एंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड they are distributed everywhere. And for example, on your skin you can have Staphylococcus, Trichospoma and other organisms, while in your larynx you can have Neisseria, Streptococcus, Candida. In your stomach you can have Helicobacter, Lactobacillus. In your intestines you can have E. coli, Lactobacillus and various organisms. So 57% ह्यूमन बॉडी में 57% सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती हैं. तो ये आखिर होते कहाँ हैं? तो ये हमारे त्वचा के ऊपर या हमारे बॉडी के अंदर हर जगह प्रेजेंट होते हैं,
जैसे कि हमारे स्किन के ऊपर स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो सकता है, हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स जो गले का पार्ट है इसमें स्ट्रेप्टोकोकस या कैंडिडिया हो सकता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में लैक्टोबैसिलस या फिर इकोलाई हो सकता है, हमारे स्टमक में स्ट्रेप्टोकोकस या फिर बैक्टीरियोइड्स या हेलिकोबैक्टर ये ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये सभी ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये अलग अलग पोर्शन में रहने वाले बैक्टीरिया के नाम हैं। ये इनका पर्टिकुलर नीश है, मतलब ये यहाँ पर आपको पाए जाते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, these are the examples of microorganisms present in and on our human body. So microorganisms can cause diseases. So various kind of skin diseases, various internal diseases like COVID and plant diseases are caused by microorganisms. So ये microorganism या जो सूक्ष्म जीव है इनकी वजह से काफ़ी प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि ये स्किन स्ट्रक्चर डिसीज़ है, जैसे कि कोरोना वायरस डिसीज़ है, या फिर प्लांट को होने वाले कई सारे डिसीज़ है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हर एक टाइप जो हमने देखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ, तो इन सभी से कुछ कुछ डिसीजेस होते हैं। बैक्टीरिया से फॉर एग्जांपल कॉलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया हो सकता है। वायरस से कॉमन कोल्ड, मीसल्स या वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर ये हो सकता है। फंगस से कैंडिडियासिस एंड एथलेट्स फुट हो सकता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। हेलमिंथ से एस्केरियासिस या फिलारियासिस हो सकता है। So the bacteria can cause various diseases like diphtheria, cholera, typhoid. Virus can cause measles, hepatitis, viral hepatitis and dengue fever, chikungunya. Fungus can cause candidiasis and athlete's foot. Malaria is an example of protozoal disease, while ascariasis is an example of helminthic diseases. So microbes can also help in cure and treatment, and also in the prevention of various diseases. As we see in these two images, the drop given to the girl and the intramuscular injection given to the patient or the healthy volunteer, these are the examples of vaccine in which microorganism particles can be used, or live or dead microorganism can be used. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ वैक्सीन के तौर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं पोलियो वैक्सीन या फिर कोरोना की वैक्सीन। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन के लिए काफ़ी सारे बेनिफिशियल काम भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि वो हमारे म्यूकस नेसल कैविटी में म्यूकस प्रोडक्शन कर सकता है, वो हमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और काफ़ी सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी हम वो प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के बॉडी के ऊपर या अंदर प्रेजेंट होता है उनको माइक्रोबायोम कहा जाता है। So, microbiome is the term which is used for collectively denoting microorganisms present on the skin and inside the human body. This microorganism or microbiome can play very essential and beneficial role for humans. And for example, the nasal cavity microorganism can produce mucus, which is very essential for us, and it also produces some antimicrobial chemicals which prevent us from various diseases. In the mouth, it is microorganism can help in the digestion, and in lungs they can lubricate the pulmonary tissues. In stomach they can prevent gastric complication. In colon region they can digest the complex carbohydrate, and they can maintain the pH and peroxide productions, and they also fortify or boost the immune system, and in this way they are very beneficial for humans. So what are the different applications of microorganisms? We all consume curd. So curd is manufactured or produced by fermenting the milk. So what is the role of microorganism here? Microorganism play the key role of conversion of milk into curd by fermentation. Similarly, the paneer which we eat, it is also produced by using microorganism. In investigation of crimes, microorganism can play significant role for the detection uh, or for collecting the samples and describing who was the culprit or who was the criminal. Also, microorganism can help to produce insulin, which is very essential for the diabetic patient, and insulin can obtain by recombinant DNA technology and using microorganisms. So this can be helping in the treatment of various diseases. Also, as we see here in the central image,
Various nodules are formed in the roots. So these nodules are the symbiotic association between root and microorganism. So this symbiotic association is helpful for the nitrogen fixation, which is very essential for the plants. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर्ड या पनीर बनाने में होता है, जहाँ पे वो मिल्क का फर्मेंटेशन करता है। क्रिमिनल सीन्स पे, जहाँ पे हम कोई क्राइम सीन देखते हैं, वहाँ पे क्रिमिनल को ढूंढने के लिए या जिसके साथ क्राइम हुआ है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसको पहचानने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो सकता है। और अलग अलग प्रकार के दवाएं या एंटीबायोटिक और इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो सकता है। जैसे कि इंसुलिन यूज़ किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, और इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके। और यहाँ बीच वाली इमेज में आप देख सकते हो रूट नोड्यूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो रूट नोड्यूल्स क्या होता है? रूट नोड्यूल्स होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट रूट। सिम्बायोसिस मतलब क्या? जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट के रूट्स दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हुए यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें दोनों का बेनिफिट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनका प्रोटेक्शन एंड फूड मिलेगा और नाइट्रोजन फिक्स होकर प्लांट को भी बेनिफिट आएगा। सो in which fields microorganisms can be used? There are numerous fields in which microorganisms find their application. For example, nanobiotechnology, pharmaceutical industry, food processing industry, wastewater treatment, biosensors, biofuels, bioremediation, and for of which we have seen food industry or food production. We also seen agriculture application of microorganisms. We have seen pharmaceutical application. Similarly, wastewater treatment of municipal corporation is performed by microorganisms, or they perform very essential role in that. Also in bioremediation, microorganism can play very essential role. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एग्रीकल्चर में होता है, फूड प्रोसेसिंग में होता है, फार्मा में होता है, ये हमने देखा है। इसके अलावा जो बंजर ज़मीन है उसको उपजाऊ करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी बेनिफिशियल रोल हो सकता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या जो भी कचरे का मैनेजमेंट करना होता है उसमें यूज़ होता है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कचरे का डिकम्पोजिशन करते हैं। उसके साथ साथ बायोफिल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर इनको कहा जाता है। इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था, और ये माइक्रोस्कोप के बेसिस पर ही इन्होंने काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्ज़र्व किया है। फर्स्ट टाइम इन्होंने काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल एनिमलक्यूल्स या मडी वाटर से काफ़ी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया और उनका काफ़ी डिटेल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है। सो this Anton van Leeuwenhoek is considered as the father of microbiology, and he has invented simple microscopes. And on using these microscopes, he has observed various kind of microorganisms under his microscope, and he has drawn very illustrative pictures which he published in various books and communication to Royal Society. And he has this is an example of what he has published, very minute details of the organisms. It was published in 1682 in Acta Eruditorium, and these are the few illustrative examples. So microbiology का father कौन है? It was Anton van Leeuwenhoek, who is considered as the father of microbiology. And in our upcoming videos we are going to study more about microorganisms, their types, their classes, diseases they cause, how that is cure, and what are the different structures of microorganisms. And also we will be studying about viruses, the causative agent of various viral diseases, and the application of these viruses for the prevention or the treatment of certain diseases and industrial application. Also, we will be looking the various scientists who have contributed in the development of the field of microbiology and the contribution for human welfare. हमारे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग प्रकार, उनके द्वारा होने वाले डिसीज़ और उनके एप्लीकेशंस के बारे में। उसी तरह से हम वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, वायरस से होने वाले अलग अलग रोग और उनका रोकथाम और उनका एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में कैसे होता है। और हम जानेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया है। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए
और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। So stay tuned for more insight. Please subscribe, share, like and comment. Till then, thank you and stay safe.